वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम जानेंगे कि कैसे हम रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजीली। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं ये वीडियो। काफ़ी सारे बिगिनर आर्टिस्ट जो होते हैं वो ना हेयर्स ड्रॉ करने में बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, जिस वजह से उनके हेयर्स रियलिस्टिक नहीं लगते। इसी चीज़ को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, बिगिनर आर्टिस्ट किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए बिना किसी मेजरमेंट के हेयर ड्रॉ करता है, जिस वजह से हेयर्स रियलिस्टिक नहीं लगते। और वही दूसरी साइड एक प्रो आर्टिस्ट बिल्कुल मेजरमेंट के साथ बहुत अच्छे से हाईलाइट एंड शैडोज को ऑब्जर्व करके एक प्रॉपर डायरेक्शन में हेयर ड्रॉ करता है। इस वजह से हेयर्स काफ़ी रियलिस्टिक लगते हैं। When I'm blue, I think of you in your eyes, how they look at mine, so kinda like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishbone thinking of my life, the vision drifting by. सो गाइस, आप क्लियरली देख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन बिगिनर आर्टिस्ट एंड प्रो आर्टिस्ट। एंड आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रियलिस्टिक हेयर कैसे ड्रॉ करना है। सो नाउ शुरू करते हैं अब हम हमारी ड्राइंग। सो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से शेड्स है। बाद में हम हाईलाइट एंड शेडोज़ को भी अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। Shining like a beacon of bright stars. How did life go wandering far until I found a lighthouse guiding me out the When I'm scared, I send a flare and you're here in a flash. When I ask, oh dear love, where did we come from? You say that like the sun. I had the will and mission, but the wrong position. I was open, praying for a sign, until I found a lighthouse in your heart. Shining like a beacon of bright stars. How does life go wandering far until I found a lighthouse guiding me out the dark.
सो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।